break and then we shall continue, people. So guys, welcome back to the session 2 or power set 2 of Crack the Clerk. So like in the previous set, this time also we'll be dealing with simplification, quadratic equations and data interpretation. Yes, of course, yesterday we haven't dealt with quadratic equations and data interpretation because of the technical issues and shortage of the time. So, but today we'll be covering all the three topics. So, first we shall start with our simplifications. So let us see question number 1. Question number 1, please. Great. So here we have question number 1. 6.5 into 4.7 into 39.21 minus 27.26 is equals to question mark. Now, if you see, there are decimals and there is multiplication, addition and subtraction, all three. Well, first look at the options. One is with a 0.6, 0.5, 45 and another one is 0.5. Okay. Now how to deal with this? We just need to check. See, in one question there is 2.5 and the option read is 2.5 and the option read is 1.5. So we just need to get the last two digits, right? How do we solve this? Let us see. So question number 1. 6.5 into 4.7 plus 39.21 minus 27.26. Okay. Suppose if we deal with these two, first, what happens? Have we directly eliminated 27 from 39? What am I left with? I am left with 12. Now 12.21 minus 0.26. So if I remove this 0.21 and 0.26, I will left with, actually this part will be minus 0.05. Then this becomes 11.95. And the rest of the part is multiplication of this. Let us multiply them. We'll get 6.5 into 4.7. If you multiply them, what do we get? 6 into 5. 7 into 5 is 35. 3 carries 42 and 20 is 62 plus 3 65. 6 carry 6 4 24. 24 plus 6 is 30. One digit after the decimal point, one digit after the decimal point. Altogether, 2 digits after the decimal point. So this becomes 30.55. So if we just add 30 plus 11 becomes 41. 0.5 and 0.95 should give something like 42 point something. Look at the options. 42.5 should be our first answer. So let us continue with the second question. So can we go to the question number 2? Question number 2. What do we have here? So this was a 1 and question number 2. 92.16 whole power 1 by 2 divided by 0.06. Okay. See, whole power 1 by 2 we already know this is nothing but root of 92.16 divided by 0.06, right? So first thing is you have to calculate the square root of this. 92.16, by looking at this I can directly tell this is just 9.6. How? Well, first we need to calculate the square root from 90 to 16. If you do this, you will get 96, right? Inside the root, if there are 2 digits after a decimal point, when we bring this out, there will be only one digit after the decimal point. So that's why this is 96. For 92.16, its root will be 9.6. And how I calculated this, we have learned it yesterday, as well as it is already explained in the speed maths videos. Please go through them. Now, divided by 0.06. Now, if you find any difficulty here,
if you observe, there are two digits after decimal point. Multiply with 100 here, multiply with 100 here. What happens? This becomes 960 and this becomes 6. So 6 into 60. So 160. Do we have the option? Yes. Option number A must be our answer. So understand क्या कर रहे हैं हम लोग इधर. तो पहला स्टेप है रूट निकालना है. 92.16 पॉइंट के बारे में भूल जाओ. 9216 का रूट निकालो, आपको मिल जाएगा 96. ठीक है ना. अभी देखो रूट के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये रूट से बाहर आता है. यहाँ पे 2 डिजिट है, तो रूट के बाहर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट रहना चाहिए. अभी समझिए तो 4 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद. रूट के अंदर डेसिमल डिजिट के बाद 4 डिजिट है, तो बाहर आते ही वो 4 डिजिट 2 डिजिट बन जाएंगे. अभी समझो 8 डिजिट है, तो इधर 4 डिजिट बन जाएंगे. सो एग्जैक्टली इट बिकम्स हाफ. तो अभी हमको मिल गया है यहाँ से 9.6 हो गया और 0.06 है. 0.06 ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है. पूरा निकाल दो, इंटीजर के लिए कन्वर्ट कर दो. कैसे करेंगे? इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई विद 100 here, multiply with 100 here. So you will get 960 by 6. Your answer must be 160. Right? Let us go to the question number 3. Question number 3, please. Now, क्या दिया हुआ है? Question number 3 में 7 power 4 into 343 whole cube divided by. तो divided by मैं सीधा यहीं पे लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पावर क्वेश्चन मार्क है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x. ठीक है ना. याद कर लो, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द सिमिलर प्रॉब्लम यस्टरडे. दिस इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ इंडाइसेस. तो कैसे करना है? लुक एट राइट हैंड साइड. 7 पावर x, व्हाट इज द बेस? 7. So right hand side base is 7 means left hand side also all the bases must be in terms of 7. तो क्या करते हैं? चलो let us rewrite it again. 7 power 4 into 343 is a 7 cube. 7 cube whole cube. That becomes 3 to 3 9. 7 power 9 divided by. This is 49, which is nothing but 7 square. 7 square whole square will be 7 power 4. That is equals to 7 power x. तो टोटल अभी देखो 4 है. Here it is multiplication means in the power it becomes addition. Now this is a division. So in the power this becomes, so this one is plus 9 and this one 7 power 4 divided by 7 power 4 means this becomes minus, that is equals to 7 power x. So what happens here? 7 power 4 get cancelled, this will be 9. X is, this is x, 7 power x. So what is x value? 9. Do we have the option? Yes, option number B must be our answer. I'm repeating. Observe this. देखो exactly the same question हम लोग already solve कर चुके हैं कल का examples में, right? तो यहाँ पे देखो right hand side में 7 power x है, तो इसका मतलब सारे बेसिस जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो भी पावर्स ऑफ 7 रहना चाहिए. इसका मतलब ऑल द बेसिस मस्ट बी 7. तो देखो ये तो 7 पावर 4 है, तो ऐसे लिख दिया हम लोग. और यहाँ पे 343 होल पावर 3 है. 343 होगा 7 क्यूब, सो 7 क्यूब होल क्यूब होगा 7 पावर 9. तो ये है 7 स्क्वायर 49 होगा 7 स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया 7 पावर 4. सो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर इजी. बट तो मैं क्या बोलता हूँ, अब ये सारे स्टेप्स के जगह पे सीधा ए स्टेप लिखना चाहिए. लिख सकते हैं क्या? चलो देखते हैं एक बार. देखो क्वेश्चन है, पहला है 7 पावर 4 लिख दूंगा. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो मैं इसको सीधा एडिशन बनाऊंगा. कहां पे? पावर में, राइट. नाउ 340 दिख रहा है, 343 होल क्यूब दिख रहा है क्वेश्चन में. देखो 343 होल क्यूब, 343 होगा 7 क्यूब, 7 क्यूब होल क्यूब 7 पावर 9, तो ये पावर हो गया 9. तो अगला ऑपरेशन क्या है हमारा? डिवीजन है. तो बेस में डिवीजन है तो पावर में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन. सो सब्सट्रैक्शन 49 स्क्वायर 49 क्या होगा? 7 स्क्वायर होल स्क्वायर 7 पावर 4. ठीक है, तो 7 पावर 4 सब्ट्रैक्ट 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 पावर x. तो सिर्फ ये चाहिए हमको.
तो एक स्टेप में पूरा आंसर निकालना चाहिए. So this is the last time I'll be explaining this kind of example. But if you, by chance we find any other examples in this way, I will be directly writing this step, people. Right? So I hope you understand. We'll take a 1 minute break and then we will continue further. Perfect ಬರ್ತಿದೆ. So let us continue, people. Question number 4. What does it say? We have 5 by 9 into question mark into 7 by 11 is equals to 70 divided by 264. Very simple question. It's all about the calculation, nothing much. So let us see. Question number 4. Cap 5 by 9 into question mark. I'll write it as x into 7 by 11. That is equals to 70 divided by 264. So that is the question, right? So in the place of question mark, I wrote x. That's it. No other changes. See, when there is only multiplication operation in the entire question, you can directly cancel numerators of the left hand side with the numerators of the right hand side and denominators of the left hand side with the denominators of the right hand side, when provided there is only multiplication operation. Suppose if you have plus or minus, then no, we cannot do that. Okay. Now let us cancel. 7 into 5 is 35, 35 into 2 is 70. 11 into 1, 11 into 2 is 22, 11 into 4 is 44. Again, 3 into 3, 3 into 8. Again, 2 into 1, 2 into 4. 2 into 1, 2 into 4. So what is left out here? 3 left out, 3 will go to the other side. Here we have x, 3 goes to the other side, 3 into 1 is 3 divided by
4. That must be my final answer. Do we have an option? Yes. 3/4. Option B is the answer. Very simple question. I wouldn't like to repeat this one. Let us directly go to the next question. Next question, please. Question number 5. What do we have? Well, 3127.62 plus 1129.49 minus question mark is equals to 778.23. Let me write it down once again. Question number 5 it is, we have 3127.62 plus 1129.49. I'll bring the other number to the left hand side, minus 778.28, and we'll send a question mark to the other side. That becomes equal to x plus x, right? Now, first, let us see. Without solving, can we get the answer? Just by looking at the options. Well, options are varying a lot. It means we just deal with the decimal part, we should get the answer. Let us see. Decimal part, 0.62.49, 0.62.49. Both are positive. And here, minus 0.28. Let us try to calculate the answer here. 9 plus 2, 11. 11 minus 8, that is 3. Here, 6 plus 4, 10. 10 minus 2, 8. 8, 3. Check out. Do we have the option? No. Or did we do any mistake here? This is 0.62, 0.49. Oh, I'm sorry. This is 0.23, right? That is right, 0.23. Now what happens? 11 minus 3 is 8. 0.88. Do we have an option? Yes, of course. Option number D, direct answer. So just do not blindly add and subtract the numbers. पहले क्या करना है? Options पे एक बार देखो. So options में देखते ही आपको पता चल जाएगा. Last 2 digits हर option में अलग है. तो इसका मतलब हमको निकालना है सिर्फ last 2 digits. Now कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंसर none of this भी हो सकता है. सही है? तो तब क्या करना है? Like this is just on the gut feeling, people. But if you want the exact answer, तो इसको कैसे कैलकुलेट? Should we add all these things? No. Addition मत करना, cancellation करना. ये होता क्या है cancellation? दिखाता हूँ देखो. यहाँ पे 700 है. मैं ये 700 को ये देखो, ये होता है 1100. 700 को 1100 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, कितना बचेगा? 400 बचेगा. तो ये जो वैल्यू है ये 429.49 है. सही है? ये देखो 3100 प्लस 400 क्या हो गया? 3500 हो गया. अभी 27 बचा है, इधर 49 बचा है, तो ये हो गया 76. 3576 मिल गया. अब इस पे ध्यान मत देना, डेसिमल पॉइंट को भूल जाओगे. इधर अभी क्या बचा है? 78 बचा है, माइनस 78. बस 78 को सब्सट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा 3. What is it? Did we do any mistake here? I think so. 3100. यहाँ पे 400, 3500 सही है. Oh, I'm sorry. This is 27. 27 ये 29 को ऐड करना था, मैंने 49 को ऐड किया. I'm so sorry. 29 plus 27 कितना होगा? 4 plus 2 is 656. 3556 minus 78. I'm sorry, यहाँ पे 76 आया था क्योंकि मैंने 0.49 को 49 समझ के ऐड कर चुका था. ना यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करो, क्या होगा? तो मैंने पहले 70 निकाल दूंगा, तो वो बन जाएगा 3486. तो 86 minus 8, that becomes 78. I get option is 3478. Now we just eliminated the decimal part. If you want, you can deal with only decimal part or only integer part, but do not add the complete numbers or subtract the complete numbers. Okay? Let us continue with the next question. Question number 6, please. What is it? Question number 6. Okay. So we have 16 into 14 plus 127 divided by 7. I think 16 into 19 it is. I'm sorry. 70 divided by 210 equal to x. ठीक है. यार यहाँ पे तो कुछ if you look at the options, guys, the options are misprinted.
These are the options of the previous question. I'm so sorry. But we shall calculate the exact answer here. What we have to do? Look, in these kind of cases, if you say there is a multiplication, there is an addition, means you cannot cancel the numerator and denominator. तो क्या करना है? पूरा आंसर निकालना है. Now you will get to know how important tables are. देखो, 19 into ये 1 ये 10 है क्योंकि this is in tens place. 19 into 10 is 190. 19 into 6 is 114. 190 plus 114 should give us 304. This together directly 304 plus 127 है. तो ये पूरा हमको बन जाएगा 300 431. एक स्टेप में बन जाएगा 431 विदाउट यूजिंग द पेन. फिर यहाँ पे देखो 70 into 1 70 into 3 ये बन गया 1 divided by 3. तो हमारा पूरा आंसर है 430 divided by 1 divided by 3. तो 3 न्यूमरेटर पे जाएगा 431. 431 into 3 should become 1293. Check out, do you have the option? I'm sorry, options are misprinted and this must be the absolute answer. See, in this case when there is addition and multiplication in the numerator, you cannot cancel the numerator and denominator. So in these kind of cases, tables are the only help that you can get here. So that is the reason I told you in yesterday's class that you must know tables until 20. Okay? So after the simplification, I will give you few prerequisites. What are the things that you have to memorize for the banking exams to improve your calculation part, right? So let us take a short break and then we shall deal with the remaining questions of the simplifications. I'm sorry, I'm so sorry. Well,
We have solved question number 6 already. So let us go with the question number 7. What does question number 7 say here? We have 4096 whole power 1 by 3 into question mark power 1 by 2. Let me write directly. Guys, if you look at that 4096, which is nothing but 16 cube. Power 1 by 3 is cube root of 4096. So this is directly 16 into x. Power 1 by 2 is nothing but root x. Next, divided by 784 power 1 by 2, which is nothing but 28, because root of 784 is 28 square. As I told you yesterday, remember cube still 20 and square still 30, so that we can directly save our time and directly write the numbers. So, and the rest is, so cube root of 1728, that must be 12 cube. Okay, now rest of the part is just cancellation part. We have 4 into 4 and 4 into 7, 4 into 1, 4 into 3. Root x is equals to what we have, 7 into 3, 21. So what is root x? X becomes, root goes to the other side, 21 square, which is 441. Do we have an option? Yes, of course, option number C. So what is happening here? See, ध्यान से देखो, जैसे ही वो नंबर 4096 को देखा मैंने सीधा बोल दिया वो है 16 क्यूब, और एक नंबर 724, I'm sorry, this is 724, root of 724. So 784, what is 784? 784 is 28 square. तो आपको ये सभी पता रहना चाहिए पहले से, ताकि हमको कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं और सीधा नंबर लिख सकते हैं. सही है. तो बाकी सब ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है. फाइनली वी गॉट 21, root x equals to 21, root को उस तरफ भेज दो, 21 स्क्वायर बन जाएगा 441. So let us not waste more time on this. Let's go to the next question. Next question please. So what do we have? Next question. Well, it is in terms of percentages. Will be interesting for sure. Question number 8. क्या है? 27% of 400 into 32% of x is equals to 5184. What will I do here? I will directly write this as 108 into 32 by 100 of x is equals to 5184. What have I done? I directly wrote 27% of 400 as 108 and 32% as 32 by 100, question mark, in place of question mark I wrote x, that is equals to 5184. Now how did I write that 108? Guys, it's a simple thing. 27% of 400 is nothing but, let me write it here, 27 by 100 of 400. Now 0000 get cancel, 27 into 4 is 108. तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ मिल गया आपको 27% ऑफ, इधर कुछ भी रहने दो, लेट मी राइट सम x y 0000 है, सीधा परसेंटेज और 00 को कैंसिल कर दो, आपको मल्टीप्लाई करना है 27 into x. तो इस प्रॉब्लम में वो है 27 into 4, 27 into 4 सीधा 108 बन गया into 32%. इधर 00 नहीं है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 32 divided by 100 of x equals to 5184. तो बाकी सब कैंसिलेशन है. Now cancellation का स्पीड कैसा होता है? It all depends on your knowledge in the tables. I don't say knowledge, that you should have memorized those tables. Now, if I look at this, I know this goes with 16 directly, so I'll go with 16 into 2. So how am I directly, cancelling without knowing whether this will be cancelled by 16 or not? हमको अभी पता नहीं है कि ये 16 से कैंसिल होगा कि नहीं है, पर मैं तो ऑलरेडी 16 से कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शंस में देखो कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है, वहां डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 101% ये 16 से कैंसिल होना चाहिए. चलो देखते हैं, 16 into 3 क्या होगा, 48. कितना बचा है, 33 बचा है, 38. 16 into 2 32. 68 में 38 में 32 निकाल दो, मिल जाएगा आपको 6. 64. 16 into 4 is 64. सही है. अभी ये देखो 108 into डायरेक्टली 3, 100 into is 300, 100 into 3 is 300, 8 into 3 is 24. So 300 plus 24, 324 सीधा.
तो फाइनल पार्ट 2 into 1 2 into 50 x is equals to 50 into 3 what is 50 into 3 150 ऑप्शन है क्या आपका यस ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर फाइनल आंसर क्या चल रहा है इधर फर्स्ट थिंग टेबल्स यार देयर इज वन कॉमन मिस्टेक सब लोग कहीं करते हैं इधर क्या जैसे आपको ना 100 लिखता है नीचे टेंट हो जाएंगे लोग सीधा ये 4 से यहाँ पे 4 से या 2 से या यहाँ पे भी 2 से कैंसिल कर देते हैं नहीं करना है तो मैंने कल भी बताया था कि बहुत अच्छा नंबर है 100 उसको लास्ट तक कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है तो इफ यू कैंसिल इट यहाँ पे 25 आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे 20 से फिर से मल्टीप्लाई मत करना तुम्हें सो लेट इट बी वेट टिल द एंड अनलेस यू डोंट हैव एन ऑप्शन तब तक कैंसिल नहीं करना है 100 को आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ओवरलैप हो गया एडजस्ट हो जाओ ठीक है ना 75% ऑफ 5 by 11 7 ना देखते हैं उसको सीधा लिखना चाहिए 3 by 4 into 5 by 11 into 3564 plus 445 is equals to x ऐसा लिखना चाहिए आपका फर्स्ट है क्यों 75% क्या होता है 75 by 100 इसका मतलब 3 by 4 डायरेक्टली Now of what is of multiplication 5 by 11 again of multiplication 3564 now right hand side में we have 445 वो minus 445 है if you bring it to this side that will become plus 445 और question mark के जगह पे मैंने लिख दिया x तो अभी कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 11 है ऑप्शंस में देखो कहीं तो डेसिमल पॉइंट है नहीं है तो ये 101% कैंसिल होना चाहिए तो क्या होगा 11 into 3 33 हो गया तो अभी यहाँ पे बचा है 26 11 into 2 11 into 4 मिल गया तो अभी क्या करते हैं 3 into यहाँ पे आई एम सॉरी वी हैव 4 here 4 into 81 सो बाकी सब कैंसिल मल्टीप्लिकेशन का फंडा है ये है 15 into 81 प्लस 445 तो क्या होगा 15 into 80 ये 8 नहीं है 80 है 15 into 80 120 15 into 1 15 so 120 plus 15 135 ये पूरा बन गया 135 प्लस है हमारे पास 445 ऐड कर दो 400 plus 100 500 45 plus 35 that should be 80 580 do we have an option I'm so sorry people यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया 15 into 80 15 into 8 is 120 15 into 80 is 1200 plus 15 into 1 15 तो ये बन जाएगा 1215 plus 445 what is 1215 plus 445 1200 plus 400 1600 15 plus 45 should be equal to 60 do we have the option yes option number D that must be my final answer so one last question we will see in the simplifications go to question number 10 please क्या बोल रहा है 44% of 740 ठीक है 44% of 740 plus 59% of 1120 is equal to x ऑप्शंस में देखो डेसिमल्स में है तो कैलकुलेशन करना ही पड़ता है तो कैलकुलेशन कैसे करना है सीधा डायरेक्टली ये बन जाएगा 7.4 into 44 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 111.2 into ये 59% इसका मतलब 59 इधर कुछ नहीं है जीरो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को क्यों ये है परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100 है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 74/10 बचेगा 74/10 क्या होगा 7.4 तो यहाँ पे भी देखो वही किया मैंने ये परसेंटेज है इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100 है 1120 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा 11.2 नाउ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा देख लीजिए सो 4 into 4 16 है इधर एक 1 है दिस इज 28 एंड दिस इज 16 28 38 44 45 यहाँ पे होगा 4 दिस इज 28 एंड दिस इज 32 नाउ एक डिजिट के बाद एक डेसिमल के बाद एक डिजिट 325.6 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 16 6 1 28 plus 16 28 plus 16 is 44 सही है और यहाँ पे आ जाओ ये है ये 18 यहाँ पे 1 की बन गया 9 19 plus 1 20 0 2 9 0 5 that is 14 16 1 0 एक 1 हो गया और
160.8. So final answer 325.6 प्लस 160.8 ऑप्शन है नहीं लग रहा है मुझे तो भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेट्स सी वंस अगेन सो दिस इज 300 485 485 86.4 आना चाहिए आपको है क्या ऑप्शंस नो ऑप्शंस आर ऑल इन 4 डिजिट्स चांस ही नहीं है आंसर एब्सोल्युटली राइट है ऑप्शन ई कैसे पता चलेगा आपको ये आंसर सही है ऑप्शन ई है यार आप आंसर्स देखो एक ऑप्शन के अलावा बाकी सब नो 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 आई थिंक आई डिड मिस्टेक people 5 this is 18 1 this is 9 19 19 plus 1 20 0 2 और ये बन गया 9 this is 0 and this is or let me do a calculation part one more time. What did I do? We have a space. Okay, fine. Let me do it. 7.4 into 44. क्या मिलेगा 16 1 28 plus 16 28 plus 16 24 45 5 year 4 year 28 32 325.6 ये तो सही है दूसरा 59% मतलब 59 into क्या है वो 1120 मतलब 11.2 ठीक है 11.2 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे 18 हुआ 1 हुआ तो ये 10 है ये 19 है 20 0 2 सी तो है this is 0 this is 9 this is 5 14 15 16 ये भी सही है तो 0 and this is one small mistake people here instead of 6 I wrote 1 that's a mistake I'm so sorry तो ये बन गया 660.8 और ये क्या था 325.6 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन गया 986.4 है क्या ऑप्शन yes option number B minor calculations yes after all we are all humans कभी कभी हो जाता है ठीक है now see again the speed if you can multiply two digit numbers and two three digit numbers within 5 or maximum 10 seconds you can solve this question within 30 to 40 seconds people now वो कैसे practice करना है about that also I have clearly mentioned in multiplication part of the speed mathematics go through that you will learn how I am directly multiplying the number how I am placing the decimal point each and everything is explained in the speed mathematics. So this is about the simplifications of today's power set, right? Now, I also told you what are the things that you need to learn to solve simplifications better, right? I told you that I'll be telling. So just copy these things down and soon after this, first I'll list those things and then we will go to quadratic equations.
integrate the answer. Okay. Coming back. See, the new topic is quadratic equations. We're talking about the importance of this topic. Guys, this was only part of the PO exams in the earlier cases. But from the last couple of years, they started introducing quadratic equations in clerical exams as well. Now, how difficult is this topic? Guys, I'll tell you, these are the 5 free marks they are giving it to you. Now, if you understand the logic behind the question, you can solve all the 5 questions within 2 minutes. You must know how to calculate the roots. Well, I haven't released the basics of quadratic equations yet, but by tomorrow evening or by day after tomorrow at max morning, you will be getting the basics of the quadratic equations video in our basic aptitude playlist. So here, initially I'll try to explain few basic things as well, and eventually I'll increase the speed, guys. Okay, now, let us look at the first question. Here I haven't given any options, people. In quadratic equations, options will be absolutely same as this always. So there one is, let me write it here. X is greater than y, x is less than y, x is greater than or equal to y, x is less than or equal to y, or x equal to y, or cannot be determined. Relationship between cannot be determined. So what does it mean, guys? There are 2 equations given here, one in terms of x and another one in terms of y. Now you have to solve both the equations and you have to tell what is the relationship between them. So options are always same. That is x greater than y, x less than y, x greater than or equal to y, x less than or equal to y, and x equal to y, or these 2 are actually combined in the problems, guys. X equal to y or cannot be determined, or relationship cannot be established between x and y. So let us look at the first question. What do we have? X square, I'm so sorry, that is x square, it is not x2. X square plus 5x minus 36 equal to 0, and y square minus 10x plus 28 equal to 0. Now let me show you the very basic and traditional method. There are 2 equations for us. One is x square plus 5x minus 36 equal to 0, and the another one is y square minus 10x plus 28 equal to 0. Okay? The first thing we need to do is factorize them. Now, how do we factorize? Here we have 36. We need to find the 2 numbers whose product is 36 minus 36 and sum is 5. Okay. Now, what do we get here? One is 6 into 6, 36. Now, whichever operation you put between 6 and 6, you will never get 5 as sum, right? These 2 are ruled out. I can take 12 into 3, 36. Now, whatever you put in between here, still you don't get 5. Suppose if I take 9 into 4. What is 9 into 4? 36, right? Now, here, plus 9 minus 4. Plus 9 minus 4. What is it? Plus 5. Product, plus 9 into minus 4, minus 36. So, this is x square plus 9x minus 4x minus 36 equal to 0. Now, if you further factorize it, I can take x common here. I'll get x plus 9. I'll take minus 4 common here. I'll get x plus 9. That equal to 0. Now we got 2 factors. One is x minus 4 equal to 0. And the other one x plus 9 equal to 0. So these are nothing but factors. What are they? These are factors of the given equation. Well, few of you might be already knowing this topic and you'll be thinking that I'm going with a very lengthy process. Yes, of course, people, I'm going with very lengthy process because I'm trying to explain you the basics yet. Okay, I will show you eventually how you can solve this question within 20 seconds. Now, तो ये क्या है? ये दोनों factors है, ये roots नहीं है. तो roots क्या होगा? Roots x equal to 4, x equal to minus 9. These are the roots of x. Now, in this case, यहाँ पे देखो 28 है. 28. We need 2 numbers whose product is plus 28 and whose sum is minus 10. तो क्या होगा? 7 into 4 ले सकता हूँ मैं? नहीं है.
7 into 4 is 28, but I'm sorry people, here we have to change the question. Actually it is not 10x, this is 11x. I'm sorry, there's a print mistake in the question, it is 11x. Okay, see the 7 into 4, 7 into 4 28, ये तो सही है. और इधर देखो सम क्या होना चाहिए, -11, तो ये है -7 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 28, -7 -4 -11, perfect. Now let us write the factors. Y square minus 7x minus 4x plus 28 equal to 0. Now if we write the factors like this, what do we get? Y common here, y common here, I'll be left with y minus 7. यहाँ पे minus 4 common ले लो, x बची, sorry, this is also y. यहाँ पे y बच गया minus again 7, that equal to 0. अभी factors क्या हुआ, y minus 4 equal to 0, y minus 7 equal to 0. ये दोनों factors है, पर हमको चाहिए roots. y is equal to 4, y is equals to 7. These two are roots. Now we need to tell the relationship between these two. Okay, to understand the relationship, let me write the number line for you so that you can actually visualize. Now every problem do we need to draw the number line? No, only for this problem, just to make you understand. Guys, if this is the number line, here I have 0. Okay, and this is the positive side and this is negative side. ठीक है, x का पहले x का एक वैल्यू है 4, 1 2 3 4, पॉजिटिव 4 है, तो ये एक x बन गया. और x का दूसरा वैल्यू है 9, -9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समवेयर हियर, -9, ये भी x है, सही है. अभी y का वैल्यूज देखो, y का वैल्यूज क्या है, एक 4 है और एक 7 है, पॉजिटिव 4, दिस इज आल्सो y, और 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, दिस इज आल्सो y. अब ध्यान से देखो, y एक जगह पे इक्वल है x के साथ, x is equal to y, और यहाँ पे x is less than y. So there are two possible solutions here. One is x is equal to y, another one is x is less than y. तो हमारा आंसर बन जाएगा x is less than or equal to y. Option है here. This is our final answer. Right? This is the actual method of solving the quadratic equation. Now let us see how to avoid all this crap and get the answer within seconds. Now, एक x का equation है, एक y का equation, सही है. See, there are different methods followed by the different people. Few people go with giving the operations. If you have plus and plus, that becomes minus and minus. If you have minus and plus, that becomes plus and plus. I won't be using that method, guys. I'll be using a simple logic what we have already learned here. ठीक है, यहाँ पे देखो x का कांस्टेंट क्या है, 36 है, इधर कांस्टेंट क्या है, 28 है, दोनों ले लो. -36 एक कांस्टेंट है, माइनस प्लस 28 एक कांस्टेंट है, राइट. इधर सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए. 36 दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए तो 5 आना चाहिए, सही है. केस दो नंबर बन गया 9 into 4. नाउ प्लस 5 आना चाहिए, तो इधर +5, ये माइनस हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो गया. तो ये है फैक्टर्स, देखो x + 9, x + 9, x - 4, दीज आर फैक्टर्स. तो ये फैक्टर्स है, तो अभी रूट्स क्या होगा, रूट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट्स मिलेंगे. x = 9 एक रूट है, सॉरी x = -9 एक रूट है, और x = ये -4 है फैक्टर, तो रूट बन जाएगा +4. और यहाँ पे 28 + 28 होना चाहिए प्रोडक्ट, और सम क्या होना है, -11. सो 7 into 4, सम क्या होना चाहिए, माइनस, तो दोनों को माइनस रखना. प्रोडक्ट -7 into -4 + 28, सही है. -7 - 4 -11, वो भी सही है. तो ये दोनों फैक्टर्स है, दीज आर फैक्टर्स. तो अभी रूट्स क्या होगा, y = 11, y = 4. So without doing all this, you can directly write the factors, people. तो अभी कंपैरिजन करो. x देखो, ये जो -9 है, ये दोनों y वैल्यू से भी नीचे है. So x is less than y. और यहाँ पे देखो
Here also x is less than y, but here x is equal to y. तो इसीलिए हमारा आंसर होगा x is less than or equal to y. So we will see few more examples on this, guys. Then you will understand more about quadratic equations. So copy this and then we'll continue with the question number 2. Okay. So question number 12. What do we have? 4x square plus 30x plus 36, 4y square plus 12y minus 27 equal to 0. So there are two equations. Let me show you. Equation number 12. Start with x and start with y. Okay. Now, okay. Here we have extra coefficients. If you observe in the previous case, we didn't have any coefficient for x square or y square. But here we have coefficients for both x square as well as y square. Let me write equations one time for you. 4x square plus 30x plus 36 equal to 0 and y, equation of the y, 4y square plus 12y minus 27 इक्वल टू 0. ठीक है. अभी क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट का, इस बार सिर्फ 36 नहीं ले सकते हैं आप, 4 into 36 लेना चाहिए, वो है कोएफिशिएंट.
36 इंटू 4 वो बन गया 144. ओके नाउ और इधर ये है x का और ये है y का. 27 इंटू 4 बन गया 108 पर माइनस 108 क्योंकि इधर माइनस 27 है. नाउ अभी फैक्टर्स निकालना है. देखो ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 144 होगा और सम 30 होना. ना 24 इंटू 6 24 इंटू 6 क्या है यार 144 बहुत सारे मेथड्स में लिख सकते हैं. एक होगा आपका 18 इंटू 8 होगा और होगा 16 इंटू 9 और 36 इंटू अभी है 36 इंटू 4 और ऐसे ही 24 इंटू 6. Now when you factorize the 144 itself definitely you will get to know how to write the 144 into product of two numbers. ठीक है आपको कुछ भी पता नहीं है ऐसा नीचे से चले जाओ 1 इंटू 144 लिखो और उसके बाद 2 इंटू लिखो 2 इंटू लिखे तो ये क्या होगा 72 और फिर से 3 इंटू लिखो ये होगा 48. ऐसा लिखते जाना चाहिए. कहीं तो एक जगह पे आपको मिल जाएगा ये 30 वाला सम. यहाँ पे सम 30 नहीं है यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है. अभी एक स्टेप आगे जाओ हो जाएगा 4 इंटू क्या है 4 इंटू 36 और इन दोनों का सम 40 हो गया. नहीं चाहिए 5 से तो नहीं होगा ये. अब 6 से करो 6 इंटू कितना 26 देखो मिल गया 6 इंटू 26 भी 144 है और दोनों का सम है 30. राइट इफ यू कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस डेफिनेटली यू विल गेट द फैक्टर सेट 1 पॉइंट पीपल. नाउ यहाँ पे 108 चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और उनका सम रहना चाहिए +12. नाउ +12 सम तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. देखते हैं 108 कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 9 इज 106 तो पर नहीं चाहिए हमको. और कहाँ लिख सकते हैं 19 इंटू 19 में वो तो लिख लेते हैं एक बार क्या हो 108 1 इंटू 108 है और सीधा फैक्टराइज कर देता हूँ मैं इसको. ये है 12 इंटू 9 इसको लिख सकता हूँ 4 4 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 ये होगा 3 इंटू 3. अभी चलिए देखते हैं क्या होगा 3 इंटू 2 इज 6 3 इंटू 3 इज 9 9 इंटू 2 इज 18 मिल गया. ये है 18 ये है 6 18 इंटू 6 ये प्लस और ये माइनस हो गया. यस ऑब्वियसली 18 इंटू 6 180 हो गया और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया. सम दोनों का पॉजिटिव 12 सभी सेट हो गया. अभी ये क्या है ये दोनों ये चारों नंबर क्या है हमारा फैक्टर्स है. फैक्टर्स क्या होगा x प्लस 24 x प्लस 6 इक्वल टू 0 y प्लस 18 इक्वल टू 0 y माइनस 6 इक्वल टू 0 पर हमको चाहिए रूट. बट केयरफुल यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं रूट दिस इज इक्वल टू -24 ये होगा रूट -6 ये होगा -18 और ये होगा +6. ये सारे रूट्स है और x का रूट्स है और ये है y का रूट्स है. बट you actually have to divide these with their coefficients. But whenever coefficients are same, you need not to divide them. But if the coefficients are different, you have to divide the roots with the coefficients. Like here, 4 से divide करना चाहिए 4 into 6 और 4 into 1.5 हो जाएगा. Now यहाँ पे 4 से divide करना है ये 4.5 होगा और ये 1.5 होगा. ठीक है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे. Even if you divide, if you don't divide, it doesn't matter as long as coefficients are same. Now अभी solution निकालते हैं. देखो कंपैरिजन शुरू करो. ये जो -24 है लेस देन y तो एक मिल गया x इज लेस देन y और दूसरा -6 इज ग्रेटर देन y और इधर लेस देन y. देखो x इज ग्रेटर देन y भी हो गया x इज लेस देन भी हो गया. इसका मतलब you can never determine the solution or determine the relationship between x and y क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे कैसे होगा. डू नॉट ब्लाइंडली रिमेंबर एक ग्रेटर देन इक्वल ऐसा कुछ आए तो एक ग्रेटर आया एक लेसर आया तो यू कैन नॉट डिटरमाइन. ऐसा मत याद रखो. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म बिहाइंड इट. ये देखो x का वैल्यूज क्या क्या है लिख लेते हैं पहले. एक -24 है एक -6 है. ठीक है एक -24 यहाँ पे लिखता हूँ -6 यहाँ पे लिखता हूँ. ये है x और ये है x और y का वैल्यूज क्या है एक है -18 इन दोनों के बीच में आएगा. ये है y और दूसरा y क्या है दूसरा y का वैल्यू है 6. राइट अभी देखो दिस x इज ग्रेटर देन दिस y
but this x is less than this y, this x is less than both the y. So we cannot tell whether x is greater than y or less than y. That is the reason answer is cannot be determined. So ये है हमारा question number 12. So let us go with the question number 13. Question number 13 please. Now अभी दो इक्वेशन है, फिर से देखो कोएफिशिएंट्स देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स है और दोनों कोएफिशिएंट्स सेम है, इसका मतलब ये स्टेप का जरूरत नहीं है. याद रखो whenever coefficients are same you need not to divide with the coefficient of x square and y square. कब डिवाइड करना है you will see that in the next problem. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दो इक्वेशन है तो सीधा लिख दूंगा मैं, इधर x का और इधर y का कोई कांस्टेंट से शुरू कर दो सीधा. तो x का देखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, 3 इंटू 22 क्या हुआ 66, और y का 18 है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट है 3, 15 18 इंटू 3 इज 54, और ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है. ठीक है ना, पहले फैक्टर्स और उसके बाद रूट्स. टू नंबर्स whose product is 66 and sum क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए. तो 11 into 6 बन गया 66. ओके, और इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, और आई एम सॉरी दिस इज प्लस दिस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 66 सही है, प्लस 11 माइनस 6 प्लस 5 वो भी सही है. चेक करो प्लस 5y है, दैट इज अ प्रिंट मिस्टेक पीपल, दैट इज प्लस 5y प्लस 5x, 13x square plus 5x minus 22 equal to 0. This is the actual equation. Now coming to the second one, what is it? 3y square minus 15y plus 18 equal to 0, वो सही है. 54 है, दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 54 हो जाएगा और उनका सम होना चाहिए माइनस 15. तो 54 18 into 3 itself is 54. सम पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए, सम नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए. 18 into 3 is 54. आई एम सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसा, माइनस 15 नहीं आएगा और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए. तो अनदर वे 54 का एक बार देखते हैं. 1 into 54 में नहीं आएगा, 2 into 27 में नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, और 3 into 18 यही से भी नहीं आ रहा है, और क्या बचा है हमको, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, सॉरी 9 into 6 से मिल जाएगा. 9 into 6 क्या है 54. ठीक है, माइनस माइनस ले लो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और दोनों का सम क्या है माइनस 15 सही है, और ये है फैक्टर्स और ये भी फैक्टर्स है. अभी रूट्स लिखो सीधा, रूट्स क्या होगा x इक्वल टू माइनस 11 एंड x इक्वल टू 6, इधर y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 6. कंपेयर करो, ये देखो ये जो 11 है दिस इज लेस देन बोथ द वैल्यूज ऑफ y, इसका मतलब x मस्ट बी लेस देन y, और x इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 6, 6 is equal to 6 but 6 is less than y, so less than y तो है already, but x is equals to y is also there, so the answer becomes x is lesser than or equal to y. So this is how we deal with the quadratic equations with the same coefficients for x square and y square. Now in the next problem we will be dealing with what happens when there are different coefficients. Copy this, we'll continue.
So let us continue, people. Question number 13. So what do we have here? We have 3x square. We have 3x square plus 5y, 5x it is again, minus 22 equal to 0. Another one we have 3y square minus 15y plus 18 equal to 0. Okay? Again, we have same, I think we have already solved this question. Go to question number 14, please. Yeah, I'm sorry, people. So this was the 13th one which we have already solved. Let us go to the 14th one. Now in the 14, if you observe, the coefficient of x square and y square are different, right? So let me write the equations. We have 4x square minus 9x minus 9 equal to 0. And another one we have 15y square minus 29y plus 12 equal to 0. Okay. So here we might waste time slightly to calculate the factors. Now let us see. The first, for x, 9 into 4, 36. So for 36 we have to find the factors. How? It should be, product must be 36, whereas sum must be, no, minus 36. Sum must be minus 9. चलो देखते हैं. 12 into 3, 36. Absolutely right. यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे. 12 into 3, 36. माइनस 36 सही है. और माइनस 12 प्लस 3, ये क्या है? माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 सही है. तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 12 और ये होगा x इक्वल टू माइनस 3. ये फाइनल रूट्स नहीं है. होल्ड ऑन, वी आर नॉट येट डन. दीज आर नॉट द फाइनल रूट्स. यहाँ पे आ जाओ. 15 into 12 क्या होगा? 150 प्लस 20 दैट इज 30, दैट इज 180. 180 का रूट्स निकालना चाहिए और प्रोडक्ट प्लस 180 रहना चाहिए और सम माइनस 29 रहना चाहिए. चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. देखो 180 को 1 इंटू 180 लिख सकता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो 2 इंटू 90 कुछ नहीं होगा. 3 इंटू 60 कुछ भी नहीं होगा. 4 इंटू 45 होगा 9. 5 से शुरू करो. 5 इंटू क्या है? 5 इंटू 36. Am I right? 5 3 is 15. Yes. 30 बचा है. ओके 6. तो कुछ नहीं होने वाला है. 6 इंटू देखो 6 इंटू 30. Why are we not getting? Did we do any mistake? Equation सही है. 15y square minus 29y plus 12 equal to 0. 15 into 10 150. 15 into 2 30 180. ये तो सही है. और इक्वेशंस 1 इंटू नहीं आ रहा है. 2 इंटू नहीं आ रहा है. 3 इंटू नहीं होगा. 4 इंटू नहीं. 4 इंटू 45 पे नहीं मिलेगा पक्का. 5 इंटू 36. What is 5 into 36? 5 into 3 15. 5 into 6 30. सही है. into 20. अरे यार, I'm sorry, my bad. नेक्स्ट स्टेप में ही मिल जाता था. मैं इधर ही स्टॉप कर दिया. चलो ठीक है. तो ये हो गया 9 इंटू 20. 9 इंटू 20 क्या है? 29. तो ये दोनों माइनस किए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा. ठीक है. और ये है फैक्टर्स. अभी रूट्स क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 20. ये फाइनल रूट्स नहीं है. आपको फाइनल रूट्स चाहिए तो इनको ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4 और यहाँ पे भी 4 और इधर y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 15. 15 से डिवाइड करो. ये डिवाइडेड बाय 15 हो गया और ये भी डिवाइडेड बाय 15 हो गया. अभी कंपैरिजन करो. इसका वैल्यू है 3. सो इसका माइनस 0.75 है. ओके. x वैल्यूज. नाउ y वैल्यूज. ये है 3/5 which is 0.6 और ये है 4/3 which is nothing but 1.33333. Now start with the x. 3. X is greater than y. X is greater than y. Perfect. In this case, x is less than y. X is less than y. So in one case, x is greater than y, whereas in another case, x is less than y. It means answer cannot be determined. The relationship between x and y cannot be determined. I hope you are understanding. So let us see one more example based on the different coefficients. Question number 15, please.
व्हाट वी हैव 4x स्क्वायर 19x प्लस 21। चलो सीधा लिख देता हूँ, इधर x का टर्मिनोलॉजी और इधर y का टर्मिनोलॉजी, ठीक है। x का पहले क्या है 21 इंटू 4 क्या हुआ 84, y का क्या हुआ 14 इंटू 3 42, लेकिन 14 इंटू माइनस 3 है तो ये बन गया माइनस 42, ओके ना। और यहाँ पे 84 है, 84 कहाँ मिलेगा हमको 84 12 इंटू 7 84, पॉजिटिव 84 मिलना चाहिए और पॉजिटिव 19 मिलना चाहिए, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये बन गया x इक्वल टू माइनस 12 x इक्वल्स टू माइनस 7। दीज आर नॉट फाइनल रूट्स, होल्ड ऑन। यहाँ पे माइनस 42 है और हमको मिलना चाहिए माइनस 19, ओके। सो माइनस 19 क्या होगा 21 इंटू 2 इज ऑल्सो 42, 21 इंटू 2 42 है, तो ये माइनस बना दो, इसको प्लस रख दो, ठीक है। माइनस 21 प्लस 2 माइनस 19 सही आ रहा है, माइनस 19y। तो ये फैक्टर्स है और रूट्स, व्हाट आर द रूट्स y इज इक्वल्स टू 21, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड दीज आर नॉट फाइनल रूट्स। तो अभी क्या करना है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 है और इधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, so both must be divided with the 4. Now either careful what is the coefficient of y square minus 3, वो सिर्फ 3 नहीं है वो माइनस 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे माइनस 3 से डिवाइड करो। अभी फाइनल आंसर क्या होगा x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 है और ये बन गया x इक्वल टू 1.75 माइनस 1.75 बनेगा 7/4 और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 21/3 7 बट माइनस 7 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 इज 0.666। अभी कंपैरिजन शुरू करो, ये दोनों नंबर इससे कम है, नो आई एम सॉरी दिस इज माइनस 7, चलो ठीक है। माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 7 तो एक मिल गया x इज ग्रेटर देन y और माइनस 3 इज लेस देन 0.66 तो एक मिल गया x is less than y। तो any equals no nothing, एक greater than है एक less than है, मतलब क्या होगा cannot be determined। So when you see one is greater and one is lesser you must always go with the cannot be determined, relationship cannot be established between x and y। now अभी ध्यान से सुनो क्या क्या याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यार टोटली 3 टाइप्स का क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला वाला एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रहता है और वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 रहता है। दूसरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से अलावा और कुछ नंबर मिलेगा पर दोनों सेम रहते हैं, तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको, सिर्फ कोएफिशिएंट का वैल्यू अलग होगा बस, आई मीन कांस्टेंट का वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सही है। और फाइनली फैक्ट रूट्स को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से नहीं करना है। Now when you have to divide only when x square coefficient and y square coefficient are different, so that is the third type. Now again there are certain different questions in between, so like when we are dealing with the further papers you will be seeing all those questions people. So this is all about the quadratic equations, copy this and we will deal with data interpretation. Mike please. Okay, I'm so sorry people, I think we cannot continue with the data interpretation even today. Well, though there were no technical issues, still we went really slow. Actually, we thought of having the class for 1.5 hours, but because of me explaining even the basics part, so that's why I'm taking more time. So even today, I don't think we can go with the data interpretation, but in the power set 1 and even in the power set 2 we have data interpretation.
but we will make sure tomorrow's session will begin with the data interpretation, and main focus will be on data interpretation, and then we will go with the quadratic equations, guys. So I think we have to wind up for the day. So, and my sincere request, make sure you continue attending the classes so that this becomes a wonderful revision for you for the clerical exam. Also, please tell your friends who are thinking for the free videos to prepare for clerical exam, because in these videos we'll be explaining both in English as well as Hindi. I'm so sorry, I did a mistake here. I told you that tomorrow I'll be explaining data interpretation, but I won't be doing people. Tomorrow you will be seeing the concepts of reasoning, like seating arrangements and puzzles, alright? So again, when I take my next class, in that class I will be dealing with the data interpretation and quadratic equations. So till then, see you all people. Please share our videos and subscribe to our YouTube channel, and ask your friends to do as well, so that many other people get helped by this stuff, and also we get a good number of audience, which will motivate us to do more number of videos like this. Thank you all. Have a good day.